welcome to the daily Hindu analysis that we've been doing from 25th of June. The newspaper session becomes extremely important for all your upcoming examinations that are your CLAT, CVT, and IB Math. So if you're someone looking for careers beyond engineering and medicine, you can look for our foundation courses. So welcome to what a day of CLAT. So today is 3rd of September. First news is about exercise Yudh Abhyas. So multiple times I have told you why countries do exercise. See, so every country, now every nation shall have their own interest. तो दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज के अपने डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं, है ना. एंड टू मेक श्योर दैट देयर इंटरेस्ट इज बीइंग सर्व्ड, दे मेक श्योर दैट दे आर यूजिंग ऑल द टूल्स. तो अगर यूएस को इंडिया पे टैरिफ लगाने पड़ रहे हैं तो इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी, राइट. तो हम इकोनॉमिकली वी ट्राई टू डू ऑल ऑफ दिस कि हम अपने ग्रुप्स बना ले. हम जियो पॉलिटिकल इशूज़ पे अपने ग्रुप्स बनाते हैं कि भाई लेट्स से सिक्किम, लेट्स से भूटान थिंग्स चाइना माइट try to influence it, right? So Bhutan has made a group with India, a pact with India. या फिर let's say US, India, Japan and Australia. So something like this. You'll do it properly, there would be a quadrilateral formed. That is why it is called as Quad. Now this is a group that is formed to counter the increasing influence of China, the South China Sea. So South China Sea जो region है, let's say the Indo-Pacific, this is the Indo-Pacific, this is the South China. So South China Sea और Indo-Pacific का जो region है वहाँ पे China अपना influence बढ़ा रहा है. So there is a group called as. अब ऐसे बहुत सारे groups बनते हैं. अब we can also have some groups such as NATO, which stands on the principle attack on one is attack on all. It is headquartered in Belgium, which is in Brussels. So Brussels, which is in Belgium, and it was established in the year 1948. Now this is led by US. It is a military organization. अब कंट्रीज़ क्या है ना आपस में एक्सरसाइजेस करती हैं. तो लेट्स से इंडिया और यूएस के कुछ इंटरेस्ट सिमिलर हैं. तो इंडिया विल कम एंड डू एन एक्सरसाइज विद यूएस. इंडिया एंड जापान विल कम टुगेदर एंड डू एन एक्सरसाइज. लेट्स से इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल कम टुगेदर एंड डू एन एक्सरसाइज. इंडिया एंड मंगोलिया लेट्स से विल कम एंड डू एन एक्सरसाइज. द एक्सरसाइज इज कॉल्ड एज नोमैडिक एलिफेंट. दिस इज अ PYQ. So you need to remember the important exercises that are conducted. Now your exercises can be both bilateral and multilateral. बाइलेटरल एक्सरसाइजेस वो होती हैं जिसमें सिर्फ 2 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे इंडिया और यूएस ने भी पार्टिसिपेट किया. एंड मल्टीलेटरल आर इन विच मल्टीपल कंट्रीज पार्टिसिपेट, जस्ट लाइक एक्सरसाइज मालाबार. चलो अंडरस्टूड. अब इसी कॉन्टेक्स्ट में वी शुड रिमेंबर दैट देयर वाज एन एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द नेम एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास. दिस टुक प्लेस इन अलास्का. नाउ अलास्का इज द 51st स्टेट ऑफ यूएस. अलास्का इज द 51st स्टेट ऑफ यूएस. 1867 में अलास्का वाज सोल्ड बाय रशिया टू यूएस. इन द ईयर 1867 रशिया sold Alaska to US. Hence, US became the 51st state of the United States. Now coming on to the next news, exercise युद्ध कौशल. अब युद्ध कौशल भी क्या है? अब जैसे मल्टीपल कंट्रीज एक्सरसाइज करेंगे, बाइलेटरल ग्रुपिंग्स करेंगे, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, वैसे ही कंट्रीज आपस में भी करेंगे. सो लेट्स से द इंडियन आर्मी वांट्स टू डू सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सरसाइज wherein they want to check some sort of weapons, wherein they want to check some sort of interoperability कि हम अगर वॉर होगा तो कैसे रिटालिएट करेंगे. उस केस में देयर इज एन एक्सरसाइज कॉल्ड एज एक्सरसाइज युद्ध कौशल व्हिच टुक प्लेस इन अरुणाचल प्रदेश, राइट. अरुणाचल प्रदेश शेयर्स बॉर्डर विद चाइना. कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज ईटानगर. एंड द सन राइजेस, इंडिया के हिसाब से देखोगे सन सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में राइज करेगा, है ना. एंड इट इज द ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया. कमिंग ऑन टू द थर्ड न्यूज इज अबाउट अफगानिस्तान अर्थक्वेक. द अफगानिस्तान अर्थक्वेक, तो व्हाट वी शुड रिमेंबर, अर्थक्वेक तो हमें याद नहीं रखना. हमें याद रखना है अर्थक्वेक मेजर कैसे होता है, रिक्टर स्केल पे मेजर होता है. ये जो अभी यहाँ पे आ रहा है ना 6 मैग्नीट्यूड, दिस इज मेजर्ड इन रिक्टर स्केल. सेकेंडली वी शुड रिमेंबर द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान विच इज काबुल. एंड ऑल्सो वी शुड दैट अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री. इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री मतलब चारों साइड से लैंड बाउंड्री है. पहला. दूसरा कैपिटल काबुल याद रखोगे. थर्ड यू शुड रिमेंबर दैट अफगानिस्तान इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हार्टलैंड ऑफ एशिया. अफगानिस्तान इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हार्टलैंड ऑफ एशिया, है ना. एंड इट इज समहाउ आल्सो रिफर्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स. तो दुनिया में जितने बड़े बड़े एम्पायर्स हुए, लेट्स से द ब्रिटिश एम्पायर, द रशियन एम्पायर एंड ऑल्सो द यूएस एम्पायर हैड टू समहाउ लीव अफगानिस्तान. तो अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, चारों तरफ से ज़मीन है. The capital is Kabul. Herat is an important city. Kandahar is an important city. You don't have to remember. Secondly, you should remember it is also called as the heartland of Asia. And then you should remember about the Richter scale. Earthquake किस पे measure होता है. And not to forget, you should remember Afghanistan is also called as the graveyard of empire. For now, I guess the news are over. I'll probably meet you tomorrow. I know it's a very short session, but बहुत ज़्यादा important articles थे नहीं. If you are liking these videos, please make sure that you are sharing with the right audience. For now, thank you so much. Have a great day ahead. Bye.